गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं अपने इस चैनल में, जहां पर हमें यात्रा करना है लवासना का, और इसके लिए आपको कठोर, लगातार, निरंतर प्रयास करना होगा, प्रश्नों को सॉल्व करना होगा। बने रहिए इस चैनल में, देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़िए। दैट्स ऑल द बेस्ट। ओके, आपके स्क्रीन पर पहला सवाल है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी नीति निर्देशक संबंध में पूछा जा रहा है। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्या है इसमें? देखिए, डीपीएसपी फैसिलिटेट स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी इन डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसीज इन स्पाइट ऑफ द चेंजेस द पार्टी इन पावर। They create a favorable atmosphere for full and proper enjoyment of the fundamental rights by the citizen. Okay, क्या ये favorable atmosphere बनाते हैं DPSP? Which are the correct statement? Okay, I think DPSP का पहला कथन, दूसरा कथन, दोनों नॉर्मल कथन है, इसलिए सी रही है। देखिए, DPSP ऑफ द स्टेट पॉलिसी के कुछ इंपॉर्टेंस रोल होते हैं। पहला बात, दे फैसिलिटेट the stability and the continuity in domestic and foreign policy in political, economic, social sphere in spite of changes in the party in power. They are supplementary to the fundamental rights of the citizens. They are intended to fill the vacuum in the part third of that is providing fundamental right by the providing for social and economic rights. Their implementation creates a favorable atmosphere for the full and proper enjoyment of the fundamental rights by the citizens. पॉलिटिकल डेमोक्रेसी विदाउट इकोनॉमिक डेमोक्रेसी हैज़ नो मीनिंग। बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी विदाउट इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का कोई अर्थ ही नहीं है। क्या करिएगा आप राजनीतिक डेमोक्रेसी लेके, जब आपके हाथ में आर्थिक लोकतंत्र है ही नहीं। अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, खाई बढ़ती चली जा रही है। ऑक्सफैम का रिपोर्ट अगर सुनिएगा तो आपको आश्चर्यजनक होगा कि केवल और केवल 1% लोग हमारी 70% धन पर अपनी हुकूमत जमाए बैठे हैं। आखिर ये कैसा देश, दिस इज विचित्र देश है, जहाँ पर हर पायदान पे आपको अलग अलग समस्याएं देखने को मिलती है। They enable the opposition to exercise influence and control over the operation of the government. The opposition can blame the ruling party on the ground that its activities are opposed to the directives. अपोजिशन को एक तरह से कहीं ना कहीं इसके साधन मिलते हैं। डीपीएसपी अपोजिशन को एक तरह से पावर प्रदान करता है, जिसके माध्यम से वो सरकार पर जो सत्ता पक्ष पे बैठे हैं उनको कहीं ना कहीं एक तरह से ये समझा सकते हैं कि आप डीपीएसपी के खिलाफ हैं, आपकी आपकी नीतियाँ जनता के हित में नहीं है। They serve as a crucial test for the performance of the government. The people can examine the policy and the programs of the government in the light of this constitutional declaration. They serve as a common political manifesto. A ruling party, irrespective of its political ideology, has to recognize the fact these principles are intended to be its guide, philosopher, friend in its legislative and executive acts. नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से संबंधित है। तो फ्रीडम ऑफ कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, फ्रीडम ऑफ रिपोर्टेज ऑफ ओरल एक्सचेंज इन कोर्ट रूम्स बिटवीन जज एंड लॉयर्स, फ्रीडम ऑफ साइलेंस, राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोर्ट्स गिवन बिलो। फ्रीडम ऑफ साइलेंस भी है, राइट टू नो अबाउट द गवर्नमेंट एक्टिविटीज भी है, रिपोर्ट करना एक्सचेंज रूम में कोर्ट रूम, ये भी सही है, सब के सब सही है। देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इम्प्लाइज दैट
Every citizen has the right to express his view, opinions, belief, and conviction freely with word of mouth, writing, printing, picturing, or any other manner. The Supreme Court held that the freedom of the speech and the expression includes right to propagate one's views as well as views of others, freedom of phrase, freedom of commercial advertisement, right against traffic tapping of telephonic conversation against tape आपका phone tap नहीं किया जा सकता है, right to telecast, that is the government has no monopoly on electronic media, right against fund held by the political party or organization, right to know about the government initiative, government activities, freedom of silence, right against imposition of pre-censorship on newspaper, right right to demonstration or picketing, but not right to strike. ध्यान रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट बात, राइट टू स्ट्राइक आपका मौलिक अधिकार नहीं है। आप डिमॉन्स्ट्रेशन कर सकते हैं लेकिन हड़ताल नहीं कर सकते हैं। Supreme Court in the recent judgment ruled that media has rights to report observation made during the course of hearing, including oral exchanges in the courtrooms between the judges and the lawyers. It is the part of the right to freedom of speech. अगला क्वेश्चन है, in the context of Indian polity, which among the following aim at establishing a government of law and not of a man? Government of law, not of a man. देखिए मतलब इसका मीनिंग क्या है, आपको समझना है कि स्टेब्लिशिंग किया गया गवर्नमेंट सरकार के कानून होने का, ना कि आदमी का कानून होगा, आदमी का शासन होगा। आदमी का शासन नहीं है यहाँ पर, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। देखिए फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड, इट्स गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑल द पर्सन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन they uphold the equality of all individuals, dignity of individuals, larger public interest, unity of nation. The fundamental rights meant for promoting the ideal of the political democracy. ध्यान रहे, आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है फंडामेंटल राइट। दे प्रिवेंट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटियन, ये कोई दादागिरी नहीं चलने वाली। अथॉरिटियन और डेस्पोटिक रूल देश में नहीं लागू हो सकता है, डेस्पोटिक में तानाशाह होता है, ठीक है। And protect the liberties and the freedom of people against the invasion of state. They operate as a limitation on the tyranny, you know tyranny, the executive and arbitrary laws on legislature. In short में कह सकते हैं हम, fundamental right aim at establishing the government of law, not a man. Okay, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ लॉज होगा, गवर्नमेंट ऑफ लॉज, कानून का शासन होगा, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ लॉज, नॉट ऑफ अ मैन, आदमी का शासन नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेन फंडामेंटल राइट ईज आर अवेलेबल बोथ सिटीजन एंड इंडियन फॉरेनर्स, दोनों को मिलता है। कौन सा कौन हो? राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, राइट प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, 21 तो डेफिनेटली मिलता ही है। एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करें वो भी तो डेफिनेटली 3 तो होगा ही। डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ विवेद किया जा सकता है कि नहीं? विवेद तो किया ही जाता है डेफिनेटली, बहुत सारे इसके ग्राउंड्स है। लेकिन प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ये चूँकि अलग अलग बेसिस पे है, तो तीसरा स्टेटमेंट सही है कि नहीं? यहाँ पर पहला ही स्टेटमेंट सही है केवल। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज गिवन बोथ, केवल और केवल यही होगा दिया है। क्या पूछा था इसमें? विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज आर अवेलेबल बोथ टू सिटीजन ऑफ एन इंडिया एंड फॉरेनर्स, दोनों को मिलता है। राइट टू फंडामेंटल एलिमेंट्री एजुकेशन तो मिलता ही है सबको, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी शायद नहीं दिया जाता है। लेट्स सी, इसका सवाल केवल एक है। देखिए फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल बोथ सिटीजन एंड इंडियंस एंड फॉरेनर्स, दोनों को मिलता है। एक तो आर्टिकल 14 जो कि इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन लॉ की बात करता है। दूसरा है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21, दोनों को मिलता है। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन 21 का ए, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस आर्टिकल 22, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स इन फोर्स्ड लेबर आर्टिकल 23, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज आर्टिकल 24, freedom of conscience and free expression, practice, propagation of religion 25, freedom of manage religious affair article 26, freedom for payment of taxes or promotion of any religious article 27, freedom from attending
religious instruction or worship in certain educational institution, Article 28. But following fundamental rights are available only to the citizen, not to the foreigner. कौन कौन? Prohibition of discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex, place of birth. ये तो ठीक है, सही बात है, क्योंकि विभेद तो हम कर सकते हैं, लेकिन फॉरेनर्स के लिए नहीं, फॉरेनर को नहीं मिलता है। तो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के तरफ पे सिर्फ और सिर्फ ये जो अधिकार दिया गया है वो केवल भारत के नागरिक को। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 16। प्रोटेक्शन ऑफ सिक्स राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंट, प्रोफेशन, आर्टिकल 19। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये जो है ना आर्टिकल 21 में, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है आपको सुन के। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी केवल, देखिए आर्टिकल 20 तो दिया गया सबको, लेकिन ये प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है ना, वो 21 जो है केवल और केवल भारत के नागरिक को दिया गया है। राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू स्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आर्टिकल 30। Which among the following constitute the bedrock of the democratic system in the country, at the same time check the absoluteness of authorities of the government? बेडरॉक है, बेडरॉक क्या है? ऑफकोर्स फंडामेंटल राइट। देखिए फंडामेंटल राइट आर सिग्निफिकेंट इन फॉलोइंग रिस्पेक्ट। किस प्रकार से फंडामेंटल राइट जरूरी है? देखिए, दे कॉन्स्टिट्यूट बेडरॉक ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम इन द कंट्री। They check the absoluteness of authority of the government. They provide necessary condition for the material and moral protection of man. They serve as a formidable bulwark of individual liberty. They facilitate the establishment of the rule of law in a country. They protect the interests of minorities and weaker sections of the society. They strengthen the secular fabric of the Indian state. They lay down the foundation stone of the social equality and social justice. They ensure the dignity and respect of individuals. They facilitate the participation of the people in the political and administrative process. Next one. Which of the following statements are correct regarding the devices of direct democracy? अच्छा, कौन कौन सा डायरेक्ट डेमोक्रेसी के मतलब कुछ साधन होते हैं? रेफरेंडम, referendum is a method of obtaining the opinion of the people on any issue of the public importance. ओपिनियन मतलब लोगों का राय जानने के लिए रेफरेंडम कराया जाता है कोई भी पब्लिक इंपॉर्टेंट इशू को लेकर। इट इज़ जनरली यूज टू सॉल्व द टेरिटोरियल डिस्प्यूट। ओके, ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट को लेकर होता है क्या? इनिशिएटिव इज अ मेथड बाय मीन्स ऑफ विच द पीपुल कैन प्रोसेस या प्रपोज अ बिल टू द लेजिस्लेचर फॉर इनैक्टमेंट। मतलब किसी बिल को लेकर अगर उसको इन्फोर्स कराना हो तो लोगों के द्वारा मतलब प्रपोज किया जाता है कि ये बिल बनाया जाए, इस बिल को लागू कराया जाए। रिकॉल इज अ मेथड बाय मीन्स विच द वोटर्स कैन रिमूव अ रिप्रेजेंटेटिव और एन ऑफिसर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म व्हेन ही फेल्स टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज properly. Plebiscite is a procedure whereby a proposed legislation is referred to the electorate for a settlement by their डायरेक्ट वोट्स। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, एक और चार को फ्लिप कर दिया गया। तीन डेफिनेटली सही है, दो भी डेफिनेटली सही है, तो तीन और दो इसका सर दो और तीन के साथ जाएंगे दिया है। देखिए डेमोक्रेसी इज टू टाइप्स, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। फर्स्ट अगर बात करें डायरेक्ट डेमोक्रेसी की, तो पीपुल एक्सरसाइज देयर सुप्रीम पावर डायरेक्टली इन द केस, ठीक है, इस केस में जैसे कि स्विट्जरलैंड में देयर आर 4 डिवाइसेस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जैसे कि इसको रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल, प्लेबिसाइट। रेफरेंडम का मतलब होता है प्रोसीजर वेयर बाय a proposed legislation is referred to the electorate for the settlement by their direct votes। मतलब कोई बिल बनाया गया, कोई रेफरेंडम, कोई प्रपोज लाया गया, उसको डायरेक्ट हम लोगों के बीच में दे दिया गया, उस पर अपना बिल विचार कीजिए। इनिशिएटिव इज ए मेथड बाय मीन्स of which the people can propose a bill to the legislature for enactment। Recall is a method by which the voters can remove a representative or an officer before the expiry of his term when he fails to discharge his duty properly.
Plebiscite is the method of obtaining the opinions, ideas of people on any issue of public importance. It is generally used to solve the territorial dispute. प्लेबिसाइड जिसे आप जानते होंगे, कहाँ कहाँ प्लेबिसाइड किया गया था, क्या आप मुझे नोट में भेज सकते हैं लिखकर? बताइए. Which of the following provisions in Indian Constitution define the Indian nature of Indian state? कौन कौन से नेचर बताता है भारत की नेचर? फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट, प्रियम्बल, डीपीएसपी. इसमें जो ऑप्शन है सी, प्रियम्बल हमारा भारत की नेचर को बताता है. देखिए, प्रियम्बल रिवील्स 4 इंग्रेडिएंट या कंपोनेंट. पहला कि सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. प्रियम्बल स्टेट्स दैट कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ द इंडिया. ध्यान रहे, डिराइव इट्स अथॉरिटी फ्रॉम पीपल ऑफ इंडिया. पीपल ऑफ इंडिया, लोगों से ही इसको ताकत मिलती है. नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, it declares the India to be a sovereign, socialist, secular, democratic, republican. भारत कैसा होना चाहिए? तो sovereign, socialist, secular, democratic, republican polity. ऑब्जेक्टिव क्या है संविधान का? It specifies as justice, liberty, equality, fraternity as an objective. Date of adoption of the constitution, it stipulates the November 26, 1949 as a date. Next question about the preamble of the constitution declare India to be a sovereign republic. What does the term republic stand for in the Indian context? India has an elected head for a fixed period, vesting of political sovereignty in elected head, vesting of the political sovereignty in elected head, absence of any privileged class. Yes, of course. Overall, एक और तीन सही है. देखिए, डेमोक्रेटिक पॉलिटी कैन बी क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज. एक है मोनार्की, दूसरा है रिपब्लिक. मोनार्की में क्या होता है ना, हेड ऑफ द स्टेट जैसे कि किंग हो या रानी हो, enjoys a hereditary position. That is he comes into office through successor, उत्तराधिकार के आधार पे, जिसे ब्रिटेन में होता है. इन रिपब्लिक, अगर रिपब्लिक की बात करें, ऑन द अदर हैंड द हेड ऑफ द स्टेट इज ऑलवेज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर अ फिक्स पीरियड लाइक यूएसए. Therefore, the term the republic in our preamble indicates that India has an elected head called the president. He is elected indirectly or a fixed period of time, 5 years. A republic also means two more things. दो और भी बातें बताता है. One, vesting of the political sovereignty in the people. Vesting of this political sovereignty is in the people and not in a single individual king like. Okay. Second, the absence of any privileged class and hence all the public offices being opened. All the public offices being opened to every citizen without any discrimination. Okay. Next question. Consider the following statement regarding the features of fundamental right. They are justiciable, they are absolute and qualified. Some of them are negative in character. They are sacrosanct and permanent. पहला बात तो 2 और 4 गलत है, इसलिए आपका स्टेटमेंट 1 और 3 सही है केवल. देखिए, फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कैरेक्टराइज्ड. कुछ इसके फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए. दे आर जस्टिसेबल, ऑल पर्सन टू मूव द कोर्ट्स फॉर देयर इन्फोर्समेंट इफ दे व्हेन दे आर वायोलेटेड. दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड. They are not absolute but qualified. The state can impose reasonable restriction on them. However, whether such restriction are reasonable or not is to be decided by the courts. Thus, they strike a balance between the rights of the individuals and those of the society as a whole, between individual liberty and social control. Some of them are negative in character, that is place limitation on the authority of the state, while others are positive in nature, conferring certain privilege on the person. They are not sacrosanct. The पवित्र नहीं है, permanent नहीं है. The parliament can curtail or repeal them, but only by a constitutional amendment act and not by an ordinary act. Moreover, this can be done without affecting the basic structure of the constitution. That's very important to know about that. What does the term state encompasses as mentioned in the different provisions of the part 3 of the constitution? स्टेट में कौन कौन आता है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स, लोकल अथॉरिटीज, स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज, सबके सब. The term state has been used in different provisions concerning the fundamental rights. Hence, Article 12 has defined the term for the purpose, Part 3. According to it, the state includes the following:
The government and the Parliament of India, that is executive, legislative organs of the Union government, government and legislature of the state, that is executive and legislative organs of the state, all the local authorities, which is municipalities, panchayats, district board, improvement trust CTC, all the other authorities, that is statutory, that is statutory, or that is non-statutory. Okay, other like LIC, ONGs, ZAL. The state has been defined as a wider sense, so as to include all its agency. It is it is the action of this agency that can be challenged in the courts as violating the fundamental rights. According to the Supreme Court, even a private body or an agency working as an instrument of the state falls within the meaning of the state under Article 12. Next question about free and compulsory education to the all children of the age of 6 to 14 years is recognized as a fundamental right to the freedom of speech and expression. In the pursuance of right to education, the Parliament enacted the right of the children to free and compulsory एजुकेशन 2009। दूसरा पहला स्टेटमेंट तो गलत है। जी हाँ, देखिए आर्टिकल 21 सब बड़का ए, capital A, Article 21A declares that state shall provide free and compulsory education to the all children of the age of 6 to 14 years in such a manner as the state may determine. In such a manner that the state may determine. Thus, this provisions makes only elementary education. ध्यान रहे elementary education are the fundamental rights, not the higher education, not the professional education. This provisions was added by the 86th Constitutional Amendment Act 2002. This amendment is a major milestone in the country's to aim to achieve the education for all. The government described this step as the dawn of the second revolution, the chapter of the citizens' rights. The Supreme Court recognized a fundamental right to the primary education in the right to life under the Article 21. Okay, it in the pursuance of Article 21A, the Parliament enacted the right of the children to free and compulsory education in the RTE Act 2009. This act seeks to provide that every child has a right to be provided full time elementary education of satisfactory and equitable equality in a formal school which satisfied the certain essential norms and standards. Okay. Next question about Supreme Court has the original and exclusive jurisdiction in the case of the enforcement of the fundamental right. Exclusive jurisdiction है उसके पास. The Supreme can empower any court. Supreme Court can empower any other court than the High Court to issue writs for the enforcement of the fundamental rights. Correct पूछा गया, दोनों स्टेटमेंट गलत है. In the case of enforcement of the fundamental rights, the jurisdiction of the Supreme Court is original but not exclusive. Original तो है लेकिन exclusive नहीं है. It is a concurrent with the jurisdiction of the High Court under Article 226. It vests original power in the High Court to issue direction. It vests original powers in the High Court to issue direction, orders, and writs of all kinds for the enforcement of the fundamental right. It means the fundamental rights of the citizen are violated if the fundamental rights of the citizen is violated, the aggrieved party has the option of moving either High Court or Supreme Court directly. Article 32 confers the right to remedies for the enforcement of the fundamental rights of an aggrieved मतलब पीड़ित व्यक्ति. The Supreme Court जा सकता है. Supreme Court ruled that Article 32 is a basic feature of the Constitution, hence it cannot be abridged or taken away even by the amendment of the Constitution. ठीक है, even by the amendment to the Constitution लिखा हुआ है यहाँ पर. It contains the following four provisions: right to move to the Supreme Court by appropriate proceeding for the enforcement of the fundamental right is guaranteed. ध्यान रहे, सुप्रीम कोर्ट के पास अगर आप जाते हैं तो वो गारंटीड है. द सुप्रीम कोर्ट shall have the power to issue direction or orders or writs for the enforcement of any of the fundamental rights. The writs issue may include habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari, quo warranto. Parliament can
empower any other court. ध्यान रहे, parliament can empower any other court to issue direction, order, and writs of all kinds. However, this can be done without prejudice to the above powers conferred on the Supreme Court. Any other court here does not include high courts because Article 226 has already conferred these powers on the high courts. The right to move to the Supreme Court shall not be suspended. ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, right to move the Supreme Court shall not be suspended except otherwise provided for by the Constitution. Thus, the Constitution provides that the President can suspend the right to move any court for the enforcement of the fundamental right during the national emergency. Article 359 के तहत. Next question, right to property was removed from the list of the fundamental rights and was made a legal right by the 44th Constitutional Amendment Act 1978. What is the इसका प्रभाव क्या पड़ा? Private property is protected against executive action but not the legislative action. No guaranteed right to compensation is provided when the state acquires the property of a minority educational institution. ध्यान से सुनिए, no guarantee right to compensation is provided when the state acquires the property of a minority educational institution. The guarantee right to compensation is provided when the state acquires the land by a person under his personal cultivation. Okay, that's very tough question for you. I think you know about the very बहुत से मतलब राइट टू प्रॉपर्टीज के बारे में तो बहुत कुछ पढ़ा होगा आप लोगों ने, लेकिन ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सॉल्व कीजिए. देखिए, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही बात है कि प्रोटेक्टेड तो किया गया है एग्जीक्यूटिव एक्शन के तहत, लेकिन कानून बना के तो आपका जब संपत्ति छीना तो जा ही सकता है. तो इसमें पहला जवाब सही है, दूसरा जवाब आप पढ़ लीजिए अच्छा से, गलत है, और तीसरा जवाब तो यहाँ पर ऐसा है ही नहीं ऑप्शन 1 और 3 वाला, तो डेफिनेटली आई थिंक ए इज द राइट आंसर. ओरिजिनली शुरुआत में राइट टू प्रॉपर्टी वाज वन ऑफ द 7th फंडामेंटल राइट्स अंडर द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. या द 44th Amendment Act of 1978 abolished the right to property as the fundamental right by the repealing the Article 19 subclause 1 subclause F and Article 31 from the Part 3rd. Instead, the Act inserted a new Article 300A in the Part 12 under the heading Right to Property. It provides no person shall be deprived of his property except by the authority of law. किसी को भी उसकी संपत्ति से विहीन नहीं किया जा सकता है सिवाय कानून बना के. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि राइट टू प्रॉपर्टी स्टिल रिमेन लीगल राइट. अभी भी वो लीगल राइट है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है. लीगल बोलिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बोलिए, यूपीएससी दोनों दे दे तो डेफिनेटली दोनों में लगाइएगा. Though no longer a fundamental right, it is not a part of basic structure of the Constitution. The right to property as a legal right, distinct from the fundamental right, has following implication. क्या फायदा होगा इसका अगर लीगल राइट है तो? It can be regulated, it can be curtailed, it can be abridged, it can be modified without constitutional amendment by an ordinary law of the parliament. It protects private property against executive action, but not legislative action. In the case of violation, the aggrieved party, I, me, you, anyone, aggrieved party जिसकी संपत्ति छीन ली गई है, तो person can not directly move to the Supreme Court under the Article 32. आप जा नहीं सकते हैं. Right to the constitutional remedies including इसमें नहीं आता है. For the enforcement, he can move high court under the article 226 के तहत, तो वो जा सकता है. No guaranteed right to compensation, क्षतिपूर्ति की कोई गारंटी नहीं है यहाँ पर. In the case of acquisition या फिर requisition of the private property by the state, सरकार चाहे तो आपकी जमीन छीन भी सकती है. दो फिर भी
fundamental right to property under Part 3 has been abolished, the Part 3 still carries two provisions which provides for the guaranteed right to compensation in the case of acquisition or reacquisition of the private property by the state. Two cases where compensation has to be paid here. देखिए, when the state acquires a property of a minority educational institution, अगर वो minority institution है तब तो सरकार ऐसा नहीं कर सकती, उसको क्षतिपूर्ति देना ही पड़ेगा. ठीक है, the two cases compensation has to be paid when the state acquires the property of a minority educational institution. जैसे मदरसा है, अगर उसकी संपत्ति या वो पार्ट जो मदरसा में आता है वो अगर हड़पती है सरकार तो उसको क्षतिपूर्ति देना पड़ जाएगा. When the state acquires the land by a person under his personal cultivation and land is within the statutory ceiling limits, तब भी देना पड़ जाएगा. अगर कोई व्यक्ति पर्सनल कल्टीवेशन करता है तो उसकी जमीन नहीं छीन जा सकती है. द फर्स्ट प्रोविजन बट एडेड बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 और द सेकंड प्रोविजन जो दिया गया है 31A वो 17वां संविधान संशोधन 1964 में ही जोड़ दिया गया था. Which of the following directive principle reflects the ideology of socialism? समाजवाद का सिद्धांत. ओके, इसका लिए पूछा जा रहा है कौन कौन से समाजवाद के प्रिंसिपल को दिखाते हैं. To make provisions for just and human condition of work and maternity relief. Okay. To secure opportunities for healthy development of a children. To secure for all citizen a uniform civil code throughout the country. देखिए जो जानते हैं उस पर दिमाग लगाइए. तीसरा स्टेटमेंट तो डेफिनेटली ये सोशलिज्म है नहीं बल्कि ये तो लिबरलिज्म है, उदारवाद है. तीसरा अगर छाटना तो छाटिए, देखिए तीन कहीं दिया हो तो तीन तीन दिन खत्म. एक और दो आंसर, यू गॉट द आंसर विदाउट नोइंग अबाउट एनीथिंग. जस्ट एक आंसर से आप. तो कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन एनी क्लासिफिकेशन. ध्यान रहे कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल का. However, on the basis of their content and direction, they can be classified into three broad categories like a socialist, Gandhian, and liberal intellectual कर सकते हैं. Socialist principle reflect the ideology of socialism. They lay down the framework of a democratic socialist state at aim at providing the social and economic justice and set the path towards the welfare state. दे वो मतलब कोशिश करते हैं टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग ए सोशल ऑर्डर प्री मीटेड बाय जस्टिस सोशल. कौन कौन जस्टिस होना चाहिए? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज. आर्टिकल 38 टू secure the right to adequate means of livelihood for all citizens. The equitable distribution of material resources of the community for a common good. तीसरा, prevention of concentration of wealth and means of production. चौथा, equal pay for equal work for men and women. Preservation of health and strength of the workers and children against forcefully abuse. Opportunities for healthy development of children. 39, to promote equal justice and provide free legal aid to poor. 39A, to secure the right to work, to education and to public assistance in the cases of unemployment, old age, sickness and disablement. Article 41, to make provisions for just and human condition of work and maternity relief. Article 42, to secure a living wage, decent life, standard of life, social culture opportunities for all workers. Article 43, to take steps to secure the participation of workers in the management of industries. 43A, to raise the level of nutrition and standard of living of people and to improve the public health. Article 47. Which of the following directive principles of state policy were added by the 42nd Constitutional Amendment Act 1976? कौन कौन से स्टेट पॉलिसी को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा? To secure the opportunities for healthy development of children, to minimize inequalities in income, status, facilities and opportunities,
to take steps to secure the participation of workers in the management of industries, to promote voluntary formation, autonomous functioning, democratic control, and प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स। देखिए तीसरा स्टेटमेंट तो डेफिनेटली सही है। अब चौथा स्टेटमेंट तो आप जानते ही हैं कि ये कोऑपरेटिव वाला है। तो आप चौथा स्टेटमेंट के साथ नहीं बल्कि तीसरे स्टेटमेंट के साथ खेलिए। तीसरा स्टेटमेंट जहाँ जहाँ है वहाँ आंसर संभावना है। तो इसका सही जवाब 1 और 3 ही है। 3, 4, 4 तो गलत था, इसलिए आपको 1 और 3 सही मिल गया, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात बहुत बाद में हुई है। ठीक है, देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 एडेड 4 न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू द ओरिजिनल लिस्ट। दे रिक्वायर द to secure opportunity for healthy development of children. Article 39 to promote equal justice and provide free legal aid to the poor. Article 39 subclause A to take steps to secure the participation of workers in the management of industries. 43A to protect and improve the environment and to safeguard forest and wildlife. Article 48A. The 44th Amendment Act 1978 added one more directive principle, which requires the state to minimize inequalities in income, status, facilities, and opportunities. 46th Amendment Act 2002 changed the subject matter of the 44th Article 44 and made elementary education as a fundamental right. Article 21A. The amendment directives a directive requires the state to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 years. The Amendment Act of 2011 added a new directive principle relating to cooperative societies. It requires the state to promote voluntarily formation, autonomous functioning, democratic control, professional management of cooperative societies. Consider the following statement. The laws related to formation of new states shall be passed by special majority of the parliament. मतलब laws related to the formation of new states shall be passed by the special majority of the parliament. ध्यान सुन लीजिए. Indian territory can be ceded to a foreign state by amending the constitution under Article 368. Indian territory can be ceded, क्या किसी को दिया जा सकता है foreign state को by amending the constitution under 368. Boundary dispute between India and another country can be settled by amending the constitution under Article 368. देखिए पहला स्टेटमेंट तो गलत है, आप जानते ही हैं। दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो पहला और दूसरा के सहारा अगर आप आंसर खोजने चाहिएगा कि क्या बाउंड्री डिस्प्यूट जो होता है उसके लिए कोई स्पेशल अमेंडमेंट की ज़रूरत होती है क्या? जी हाँ, जैसे आपको पता होना चाहिए जो भारत और बांग्लादेश के बीच यानी बेरोजगारी को लेकर भी आप चाहे तो उसको जोड़ सकते हैं। तो इसका सही जवाब है 2 और 3। लेट्स सी, इसका सही जवाब है केवल 2। क्या हो गया आखिर गलत? देखिए लेट्स सी समथिंग अबाउट इट। देखिए आर्टिकल 4 क्या कहता है? इट सेल्फ डिक्लेयर्स द लॉज मेड फॉर एडमिशन हो या इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक नई स्टेट का। अंडर आर्टिकल 2 ध्यान रहे, अंडर आर्टिकल 2 के तहत नया राज्य एडमिशन होना चाहिए या इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरिया, बाउंड्री, नेम, एग्जिस्टिंग स्टेट under the Article 3 are not to be considered as an amendment of the Constitution under the Article 368. This means that such law can be passed by a simple majority by the ordinary legislative process. Thus, the power of the Parliament to demonize the area of the state under Article 3
include also the power to secede Indian territory to the foreign country. क्या इसका यही मतलब है? क्या इसका मतलब भी यही है कि भारत किसी भी देश को अपना हिस्सा दे सकता है? This question came up the examination before the Supreme Court in reference the made by the president in 1960. 1960 में जाते हैं हम लोग. The decision of the central government to secede part of a territory known as बेरूबारी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, वेस्ट बंगाल का एक हिस्सा था बेरूबारी, to Pakistan lead a political agitation and controversy and thereby necessitated the precedent reference. उस समय दिक्कत हो गया था बहुत कुछ. Supreme Court held that the power of the Parliament to demonize the area of the state under Article 3 does not cover. इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें वो भी आता है. Does not cover the secession the secession of Indian territory to a foreign country. Hence, the Indian territory can be ceded to a foreign state only amending the constitution under the Article 368. Consequently, the 9th Constitutional Amendment Act 1960 was enacted to transfer the said territory to Pakistan. On the other hand, the Supreme Court in 1969 ruled that settlement of a boundary dispute between Bharat हो या किसी और देश के साथ हो, country does not require constitutional amendment. It can be done by the executive action as it does not involve the cession of Indian territory to a foreign country. तो जब बात डिस्प्यूट की हो, उसको सेटलमेंट करने की हो, तो इसके लिए कोई विशेष संविधान संशोधन की कोई जरूरत नहीं है. बस एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ऐसा हो सकता है, क्योंकि इसमें आप किसी भारत के किसी टुकड़े को, भारत के किसी हिस्से को आप किसी दूसरे देश में दे नहीं रहे हैं. अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द क्रिएशन ऑफ द न्यू स्टेट इंडियन टेरिटरी? सब चीज मिला के. अब तो ये रिमेमरिंग फैक्ट्स है, आपको याद रखना होगा. अगर याद है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको एलिमिनेट कर दीजिएगा. देखिए, इसमें सबसे पहले दादरा नगर हवेली, पुडुचेरी, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम. ऑप्शन 4 है यहाँ पर. तो नागालैंड पहला ऑप्शन ही सही है, दादरा नगर हवेली. उसके बाद पुडुचेरी बना, फिर नागालैंड बना, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम. तो दादर नगर हवेली जो कि एक पोर्तुगीज रूल्ड टेरिटरी until the liberation in 1954. Subsequently, the administration was carried out till 1961 by the administrator chosen by the people themselves. It was converted into a union territory by the Indian government by the 10th Constitutional Amendment 1961. दादर नगर हवेली को 1961 में एक यूटी बना दिया गया. पुडुचेरी. The territory of Puducherry comprises the former French establishment in India known as the Puducherry, a Karikal, a Mahe, and Yanam. The French handed over this territory to India in 1954. Subsequently, it was administered as a acquired territory till 1962, when it was made an union territory by the 14th Constitutional Amendment 1962 को इसको 14th Constitution 14वां संविधान संशोधन किया जाता है. नागालैंड की बात करें 1963, the state of Nagaland was formed by taking the Naga Hills and Tansang area out of the state of Assam. This was done to satisfy the movement of the hostile Nagas. However, before giving Nagaland the status of the 16th Constitutional Amendment, 16th state of the Indian Union, it was placed under the control over the governor of Assam in 1961. Tripura, 1972. The political map of the Northeast India underwent a major change. Thus, the two union territory of Manipur and Tripura and sub-state of Meghalaya got statehood, and two union territory of Mizoram and Arunachal Pradesh, originally known as Northwest Frontier Agency (NEFA), came into being. With this, the number of state of union territory increased to 21. मणिपुर 9वां बना, त्रिपुरा 20वां बना, मेघालय 21वां बना. अगला क्वेश्चन है, which of the following part B state at the time of the commencement of the constitution? B पार्ट बी का कौन कौन हिस्सा था? जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मैसूर, मणिपुर, राजस्थान. जम्मू कश्मीर, मैसूर कहाँ से आ गया? मणिपुर, राजस्थान. 1 3 5 ओनली 1 3 5 जम्मू कश्मीर, मैसूर और 5वां राजस्थान. देखिए, 1950 द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंट 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन. 4 प्रकार के राज्यों का वर्गीकरण किया गया था और यूटी का भी.
पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। देखिए, इन ऑल द नंबर्ड 29, ओवरऑल दे नंबर्ड 29। पार्ट ए स्टेट कंप्राइजेज 9, पार्ट ए में 9, वाइल गवर्नर्स प्रोविंस of the British India. Part B states consist of 9 erstwhile princely state with the legislature. Part C states consisted of erstwhile chief commissioner provinces of the British India and some of the erstwhile princely states. The Part C states in all 10 in number were centrally administered. Andaman and Nicobar Island were kept as a solitary Part D territories. पार्ट बी स्टेट में हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश या मध्य भारत, मैसूर, पटियाला, ईस्ट पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, तरवानकोर, कोचिन, विंध्य प्रदेश, त्रिपुरा एंड मणिपुर with the part C. Which of the following provision of the constitution are amended by the special majority of the parliament and consent of half a state legislature required? Okay. The extent of executive power of the union and the states, abolition or creation of legislative council in the state, citizenship acquire and termination, election of the president and its manner. तो आप इसमें 2 छोड़ दीजिए, 3 छोड़ दीजिए, 2 और 3 छाट दीजिए, देख लीजिए ऑप्शन मिल जाएगा आपको आराम से। तो बिल्कुल 1 और 4 आंसर सही है। द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच आर रिलेटेड टू द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलिसी can be amended by a special majority of the parliament and also with the consent of half of the state legislature by the simple majority. If one or some of or all of the remaining states take no action on the bill, it does not matter. The moment half of the states give their consent, the formality is completed. There is no time limit within which the states should give their consent to the bill. ध्यान रहे, there is no time limit within which the states should give their consent to the bill. सबसे बड़ी बात तो यही होगी, तो स्टेट के पास तो पावर तो कुछ ना कुछ तो है ही कि वो चाहे जब मन चाहे तब तक बिल में अपना सहमति ना दे। द फॉलोइंग प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड इन दिस वे। कौन कौन सा प्रोविजन है? तो इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, राष्ट्रपति का चुनाव, उसके तरीके क्या होने चाहिए। एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स, एग्जीक्यूटिव की जो पावर है उसकी सीमा कितनी है, रिलेटेड टू यूनियन हो, स्टेट्स हो। Supreme Court and High Courts, distribution of legislative power between the Union and the states, goods and service tax, any of the list in the 7th schedule, representatives of the states in the parliament, power of the parliament to amend the constitution and its procedure, Article 368 itself. Provisions related to abolition or creation of a legislative council in a state or citizenship acquisition and termination can be amended through the simple majority only. Consider the following statement regarding this provision related to the amendment of the Constitution as laid down in Article 368. The bill is introduced in the Parliament with the permission of the President. Okay, the bill must be passed in each house separately only by a special majority of the Parliament. The President must give his assent to bill. He can neither withhold his assent to the bill nor return the bill for reconsideration of the Parliament. देखिए, पहला बात तो पहला स्टेटमेंट ही गलत दे दिया वो, तो पहला छोड़ दीजिए, तीसरा सही है, दूसरा भी सही है। चलिए, पहला स्टेटमेंट छोड़ दीजिए, तो डेफिनेटली इसका सही जवाब आपको मिल चुका हो 2। इसका सही जवाब केवल 3 सही है। आई डिड रॉन्ग, क्या गलती हो गया? केवल और केवल इबल मस्ट ओनली बाय स्पेशल मेजोरिटी नहीं, स्पेशल मेजोरिटी नहीं, यहाँ पर वो स्टेटमेंट मैंने पढ़ने में गलती कर दी। इफेक्टिव मेजोरिटी के साथ पास होना चाहिए था। देखिए, आर्टिकल 368 प्रोवाइड्स फॉर 2 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट। आर्टिकल 368 में 2 प्रकार के संशोधन की बात की है, दैट इज बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड ऑल्सो द रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट बाय सिंपल मेजोरिटी। संविधान संशोधन, but some of the articles provided for the amendment of a certain provisions of the Constitution by a simple majority of the Parliament, that is, a majority of the members of the House, each present and voting, similar to the ordinary legislative process. Notably, these amendments are not deemed to be amended of the Constitution for the purpose of Article 368. Yeah, लेकिन हम बात करते प्रोसीजर
for the amendments of the constitution as laid down the article 368 as follow. क्या क्या है? An amendment of the constitution can be initiated only and only by the introduction of a bill for the purpose in either of the house of the parliament, not in the state legislature. That's good. The bill can be introduced either by a minister or the private member and does not require prior permission of the president. Okay, this bill, the bill must be passed in each house. ध्यान रहे, the bill must be passed in each house by a special majority. By a special majority, that is majority of the total membership of the house and majority of the two-thirds of the member of the house present and voting. ये चाहिए. Each house must be passed the bill separately. In the case of disagreement between the houses, there is no provision for holding a joint session की कोई यहाँ जगह नहीं है for the two houses for the purpose of the deliberation and passage of the bill. If the bill seeks to amend the federal provisions of the constitution, it must be also ratified by the legislature of the half of the states by the simple majority, that is the majority of the members of the house present in voting. After duly passed by both the houses of the parliament and ratified by the state legislature where necessary, their will is presented. Their will is presented to the president or president को दिया जाता है assent के लिए. President must give his assent to the bill. He can neither withhold his assent to the bill nor return the bill for reconsideration to the parliament. After the president's assent, the bill becomes the act, a constitutional amendment act, and the constitution stands amended in accordance with the terms of the act. Next question: which of the following each are the elements of the basic structure of the constitution? Basic structure: judicial review, rule of the law, free and fair election. एक और दो तो डेफिनेटली है. अब फ्री और फेयर इलेक्शन होता है हमारे देश में तो ऐसा तो है ही, लेकिन ऐसा तो हम जुडिशियल रिव्यू में हम लोग को एक और दो तो दिया ही होगा. इसमें फंसा दिया आपको फ्री फेयर इलेक्शन. फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर इसको हम अगर बेसिक स्ट्रक्चर बना दे तो धड़ल्ले से उल्लंघन होता है इसका. आई थिंक 1 and 2 विल मेंशन. नो, यू आर राइट हियर. अब एक और तीन के साथ भी चाहिए. थोड़ा जरूरत से ज़्यादा सोचने के कारण ये गलती हो गया. देखिए, फ्रॉम द वेरियस जजमेंट्स द फॉलोइंग हैव इमर्ज एज ए बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और द एलिमेंट्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. Supremacy of the constitution पहला, sovereignty and democracy and republican nature of the Indian polity, secular character of the constitution, separation of power between the legislature, executive and judiciary, federal character of the constitution, unity and integrity of the nation, welfare state, socio-economic justice, judicial review, freedom and dignity of individuals, parliamentary system, rule of law, harmony, the balance between the fundamental rights and directive principle of equality, फ्री एंड फेयर इलेक्शन. ध्यान रहे, फ्री और फेयर इलेक्शन भी है इसमें. इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी तो जानता ही है सबको. लिमिटेड पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस, प्रिंसिपल या इसेंस अंडरलाइंग फंडामेंटल राइट्स, पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32, 136, 141, 142, पावर ऑफ द हाई कोर्ट्स आर्टिकल 26, 226, 227. या what is are the condition a party must fulfill in order to be recognized a national party? राष्ट्र पार्टी का दर्जा कब मिलता है? It secure 4% of valid votes polled in any 6 or more states at a general election to the Lok Sabha. It should be recognized as a state party in at least 3 states. दोनों का दोनों स्टेट में गलत है. कहें कि उल्टा दिया, मतलब वो 6% की जगह 4% और 4% की 6 इस तरह कर दिया. देखिए, The party is recognized as a national party if any of the following. देखिए, कोई इनमें से कोई एक कंडीशन पूरा हो जाए, that is all. If it secures 6%, ध्यान दें, if it secures 6% of the valid votes polled in any 4 or more states at a general election, चाहे वो लोकसभा का हो या लेजिस्लेटिव असेंबली का हो, या फिर इसके अलावा it wins 4 seats इन द लोकसभा, अगर वो लोकसभा में 4 सीट जीत ले फ्रॉम एनी स्टेट, किसी भी राज्य से या ढेर सारे राज्य को मिलाकर भी, और टोटल का टोटल 4 सीट जीत ले तो भी चलेगा. इफ इट विन्स 2% ऑफ सीट्स इन द लोकसभा एट अ जनरल इलेक्शन एंड दिस कैंडिडेट्स आर इलेक्टेड फ्रॉम 3 स्टेट्स, दिस कैंडिडेट्स आर इलेक्टेड फ्रॉम 3 स्टेट्स, if it is recognized as a state party in 4 states. Okay, next question है, consider the following statement. The total number of the ministers, including the chief minister,
in the council of minister in a state shall not be less than 15%. Less than 15%. A nominated member of a house become disqualified for being a member of the house if he joins a political party, any political party, within the 6 months from the date on which he takes his seat in the house. Decision of the presiding officer of the house regarding disqualification arising out of the defection is final and cannot be questioned in any court. तीनों स्टेटमेंट गलत है. देखिए टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन ए स्टेट और स्टेट में हो या कहीं भी हो shall not exceed 15%. ध्यान रहे shall not exceed 15% of the total strength of the legislative assembly of the state, but the number of minister including the chief minister in a state shall not be less than 12. 12 से कम भी नहीं होना चाहिए चीफ मिनिस्टर को लेकर भी. A nominated member of the house become disqualified for being a member of the house if he joins any political party after the expiry of the 6 months from the date on which he takes his seats in the house. This means that he may join any political party within 6 months of the taking his seats in the house without inviting disqualification. Any question regarding disqualification arising out of the defection is decided by the presiding officer of the house. Originally, the act provided that the decision of the presiding officer is final and cannot be questioned in court. However, in कीहोतो होलो हॉल केस 1993 के जजमेंट में जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइडेड किया गया, डिक्लेयर किया गया कि this provision is unconstitutional on the ground that it seeks to take away the jurisdiction of the Supreme Court and the High Courts. It held that the presiding officer, while deciding the question under the 10th schedule, function as a tribunal. Hence, his decision, like that of any other tribunal, is subject to the judicial review on the grounds of the Malaphites, perversity मतलब होता है गंदी राजनीति जो भी है वगैरह वगैरह etc. But the court rejected the contention that the vesting of adjudicatory powers in presiding officer is by itself invalid on the grounds of the political bias. Next question. Consider the following statement. Every union territory is administered by the president acting through the administrator appointed by him. The establishment of the legislative assembly in the union territory puts some restriction on the supreme control of the president and the parliament over them. ऐसा कुछ तो है नहीं. देखिए पहला स्टेटमेंट भी गलत हो गया और दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है क्या? नहीं, पहला स्टेटमेंट सही दिया हुआ है. हाउ एवरी यूनियन टेरिटरी इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द प्रेसिडेंट एक्टिंग थ्रू द एन एडमिनिस्ट्रेशन अपॉइंटेड बाय हिम. यस, सही तो है यार. जनरल स्टेटमेंट उसमें तुमको ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत है. तुमने सोच लिया कि ओ कहीं अगर मतलब विधानसभा हो तो क्या, विधानसभा होने से क्या है, एक्टिंग प्रेसिडेंट एक्टिंग ऑफिसर तो होगा ही. एलजी या डी एलजी का ही है, प्रशासक का ही है, या फिर उप प्रशासक का ही है, कुछ भी. एवरी यूनियन टेरिटरी, ध्यान रहे, एवरी यूनियन टेरिटरी इज एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट एक्टिंग थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय हिम. प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किया गया उप प्रशासक के तौर पर वहाँ पर उसकी भूमिका बहुत जरूरी होती है. एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अ यूनियन टेरिटरी इज एन एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड नॉट हेड ऑफ द स्टेट लाइक अ गवर्नर. वो प्रेसिडेंट का एजेंट होता है, ठीक है, वो गवर्नर की तरह बिहेव नहीं करता है. द प्रेसिडेंट कैन स्पेसिफाई the designation. President can specify the designation of administrator. It may be lieutenant governor or chief commissioner, और फिर एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकता है, चीफ कमिश्नर हो सकता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है. President can also appoint the governor of a state as the administrator of adjoining union territory. हो सकता है किसी राज्य के राज्यपाल को ही उसका मतलब प्रशासक बना दिया जाए, ऐसा भी पॉसिबल है.
इन दैट कैपेसिटी उस समय तो द गवर्नर इज टू एक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वैसी हालात में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से वो पूरी तरह से छुट्टा छाड़ हो जाता है। अब उसका मर्जी जो चाहे वो करे, तो भयंकर पावर है ये, तो सोच लीजिए। द पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ द थ्री लिस्ट इंक्लूडिंग द स्टेट लिस्ट फॉर द यूनियन टेरिटरीज। पार्लियामेंट कैन मेक लॉज on any subject of the three lists including state list for the union territories। यूनियन टेरिटरीज के संबंध में किसी भी प्रकार के किसी भी कानून की लिए पार्लियामेंट का दरवाजा खुला है। A regulation made by the president has the same force and effect as an act of parliament, can also repeal or amend any act of the parliament in the relation to these union territories. Not here. The establishment of the representative institution like legislative assembly, council of ministers in the union territory do not diminish the supreme control of the president and the parliament over them। यही आपने दिमाग लगाया ज़्यादा, इसलिए आपने समझ लिए। Consider the following statement regarding the Citizenship Amendment Act 2019। ये CAA के सामने पूछा जा रहा है। Any person apply for the citizenship by the registration if he resides in India for a year, and if one of his parents is a former Indian citizen, Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi, Christian from Afghanistan, Bangladesh, Pakistan may apply for the citizenship by the naturalization if they are residing in India for that at least 5 years before applying for citizenship। पिछले 5 साल से रह रहे हो तब अप्लाइंग करने से पहले सोच लीजिए, सोच लीजिए, सोच लीजिए। 2019 के एक्ट के तहत पूछा जा रहा है, पहले एक्ट के तहत नहीं। तो सही है भाई, इसमें सोचना क्या है दोनों। देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 सिक्स टू अमेंड द सिटीजनशिप एक्ट 1955। द सिटीजनशिप एक्ट 1955 प्रोवाइड्स वेरियस वेज इन विच द सिटीजनशिप में बी एक्वायर्ड। पहला, it provides for the citizenship by birth, descent, registration, naturalization, or by any incorporation of the territory into India। Key provision of Amendment Act: the bill amends the act to provide that the Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi, Christian from Afghanistan, Bangladesh, Pakistan who enter India on or before December 31, 2014 on India on or before 31 December 2014 will not be treated as an illegal migrant। To obtain citizenship by naturalization, one of the qualifications is that a person must have resided in India or have been in the service of the central government for at least 11 years before applying for the citizenship। हालांकि इस बिल के तहत बिल क्रिएट्स एन एक्सेप्शन फॉर हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान विथ रिगार्ड टू दिस क्वालिफिकेशन। नेचुरलाइजेशन के तहत जो 11 साल का प्रक्रिया था उसको बहुत सरल कर दिया गया, केवल लेकिन इन देश से आए हो और इन धर्म से बिलोंग्स करने चाहिए तब। ठीक है, तो अगर वो व्यक्ति अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हो विथ रिगार्ड टू दिस क्वालिफिकेशन फॉर दिस ग्रुप्स ऑफ पर्सन, द 11th ईयर रिक्वायरमेंट विल बी रिड्यूस टू 5 ईयर्स। अब 5 साल कर दिया गया है। These provisions of the citizenship for illegal migrant will not apply। ध्यान रहे, provisions of citizenship, these provisions of citizenship for illegal migrant will not apply to the tribal areas of Assam, Meghalaya, Mizoram, Tripura included in the 6th schedule। ध्यान रहे, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा included in the 6th schedule to the constitution। These tribal areas include Karbi Anglo in Assam, Garo Khasi in Meghalaya, Chakma district in Mizoram, Tripura tribal district area districts। Further, it will not apply to the inner line areas notified under the Bengal Eastern Frontier Regulation Act 1873। In this area, visits
by Indians are regulated through the inner line permit. Yeah, of course. Have you not heard about that? तो ये लबासना की जो भावना है आपके अंदर, उसको जीतना चाहते हैं, तो जी लीजिए एक बार अपने ज़िंदगी अपने तरीके से। थैंक यू।